औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर राव और आपको हाइड पार्क में खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, आप लोग खबरों में देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे बड़ा ह्यू एंड क्राई मचा हुआ है। नेशनल मीडिया पे भी है, प्रिंट पे मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, यूट्यूब पे, जहाँ पे भी आप देखें आजकल एक खातून नूर मुकद्दम का जो केस है वो बहुत ही हाई पे क्रिएट हुई है पाकिस्तान में, और हर बंदा उस पर तबसरे कर रहा है, उस पर उसको कंडेम कर रहा है। जिनको के उनके एक साहब हैं जिनका नाम ज़ाहिर जाफ़र है, उन्होंने उनको मर्डर किया। ना सिर्फ मर्डर किया कोल्ड ब्लडेड, बल्कि जिस ब्रूटली जिस तरह से उन्होंने उसका मर्डर किया और उनकी जो गर्दन को काटा, तो बहुत ही एक भयानक मंजर है जिसने बहुत सारी चीज़ों को पाकिस्तान की जो सोसाइटी है, जिसको हम वो मशरकी सोसाइटी कहते हैं, उसका एक्सपोज किया है कि जो घिनौना रूप हमारा जो इनसाइड द स्टोरी होती है, जो आप कहते हैं कि लाइट की बैक साइड पे, बैक स्टेज पे जो प्रॉब्लम होती है और बिल्कुल डार्कनेस होती है, उस डार्क चेहरे को उन्होंने जाहिर किया है इस वाक़े ने। लेकिन उसके अलावा और भी अगर आप देखें बहुत सारे वाक़यात हैं। उसके साथ ही जुड़वा शहर है रावलपिंडी, वहाँ पे एक गरीब खातून को रेप करने के बाद कत्ल कर दिया गया और उसकी छोटी बच्ची कुछ महीनों की थी, उसको भी मर्डर कर दिया गया। इसी तरीके से सिंध में हैदराबाद में एक वाक़या हुआ, आई थिंक कुरतुल ऐन एनी उनका नाम था, और बहुत सारे वाक़यात। एक ऐसा लिस्ट है, अगर उन पे नाम लिखना बैठ जाएं और उनके नाम बताना बैठ जाएं तो एक पूरा प्रोग्राम सिर्फ नाम गिनने में ही लग जाएगा। और पिछले 1-1.5 साल से देखें तो उसमें बहुत ही ख़वातीन के बारे में जो है ना, उसके खिलाफ के अगेंस्ट वायलेंस बढ़ता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक इंडिविजुअल एक्ट होता है, लेकिन जिस तरह से हमारी सोसाइटी रिएक्ट करती है, उसको कत्ल को कत्ल नहीं देखती, और एक जो क्राइम हुआ है उसको क्राइम की नज़र से नहीं देखती। उस पे आपको जो उसकी जो उसको जो उसके खिलाफ हैं उस क्राइम के, उनको भी बड़ा प्रोटेस्ट करना पड़ता है, बड़ी अपीलें करनी पड़ती हैं, बड़ा शोर मचाना पड़ता है, फिर भी शायद पता नहीं उनको भी जस्टिस मिलता है कि नहीं मिलता। हमारा कॉन्फिडेंस जस्टिस सिस्टम पे नहीं है। और उसके अलावा माशाल्लाह से पूरी हमारी एक कौम आ जाती है, उसके डिफेंस में आ जाती है और उसकी जस्टिफिकेशनें ढूंढना शुरू कर देती हैं, जिसको कि हम इंग्लिश में विक्टिम ब्लेमिंग कहते हैं। कि हम कहते हैं अच्छा वो, क्योंकि अभी देखें ज़ाहिरी अभी जो उनको मुलजिम को लेके गए थे अदालत में गया, तो सबसे पहले वो एक रिपोर्टर पूछ रहा है, जी वो आपकी गर्लफ्रेंड थी? वो गर्लफ्रेंड थी नहीं थी, वो कोई भी औरत हो सकती है। क्या जरूरी है कि वो सिर्फ गर्लफ्रेंड हो कोई कत्ल किया जाता है? खवातीन को, माँ को भी कत्ल कर देते हैं, बहनों को भी कत्ल कर देते हैं पाकिस्तान में, बीवियों को भी कत्ल करते हैं। इसी तरीके से अभी चंद साल पहले जो वो खदीजा सिद्दीकी का वाकया हुआ था, जो एक लड़के ने उन्होंने इनकार कर दिया उनसे शादी से, तो उनको स्टैब किया और उनको वो 5 साल की बड़ी मुश्किल से सजा हुई उनको। तो उसके बाद ही वो 3 साल के बाद बाहर आ गए। और बड़ी बदकिस्मती ये है कि जिस वक्त, मुझे याद है जब हम आज से चंद साल पहले वेस्ट में बैठते थे, तो अगर खुदा ना खास्ता कहीं पे टेररिस्ट अटैक होता था तो सबसे पहले हम देखते थे कि कोई मुसलमान तो नहीं है। जब कहते थे कि नहीं मुसलमान नाम नहीं है, तो हमें एक साफ रिलीफ मिलता था। इसी तरीके से अब ये देखा जाता है कि अगर कोई जुर्म हुआ है, स्पेशली खवातीन के खिलाफ हुआ है, तो देखते हैं कोई मुजरिम या मुलजिम जो है वो अमीर तबके का तो नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि अगर अमीर तबके का है तो उसका बहुत ही रिमोट चांसेस हैं कि उसको इंसाफ मिले। तो नाजरीन, ये एक लंबी तमहीद मैंने बांधी है। तो आज ही जो नूर मुकद्दम का केस और बाकी खवातीन का केस चल रहा है, उसके हम कानूनी पहलुओं पर डिस्कस नहीं करेंगे आज के प्रोग्राम में, क्योंकि वो सब जुडिस मैटर है और कोर्ट को में हो रहा हम इन्फ्लुएंस नहीं करना चाह रहे और कोई रॉन्ग स्टोरीज भी नहीं बताना चाह रहे कि मिसलीड किया जाए इन्वेस्टिगेशन को। आज हम उनके समाजी पहलू पे डिस्कस करेंगे कि हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है। आज मैंने अपने स्टूडियो में दावत दी है, 2 बहुत ही मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हैं हमारी। एक इज़ाबेला जो कि बेस्ड हैं हवाई में, उनका प्रोफेशन तो ऑफ कोर्स वो अभी रिटायर्ड हो गई हैं, प्रोफेशनल बैंकर और जो ह्यूमन सोर्सेज की वो स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं वो सोशल एक्टिविटीज़ में, जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए और फ्रीडम ऑफ ह्यूमन बीइंग के लिए आप कह सकते हैं कि नॉट द फ्रीडम ऑफ वुमेन बट शी बिलीव इन रियली फ्रीडम ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग। और उसके अलावा सिद्रा मेरानी
हमें ज्वाइन कर रही हैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से. शी इज़ आल्सो एक्टिविस्ट. उनका एक अपना सोशल मीडिया पे उस पे खामोशी अभी कभी नहीं के नाम से उनका एक बहुत बड़ा पब्लिक ग्रुप भी है फेसबुक पे. और दोनों खवातीन माशाल्लाह बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं. तो इस पे आज हमारा प्रोग्राम उनकी तारीफ पे नहीं है, वो इंशाल्लाह डेफिनेटली प्रोग्राम करेंगे. तो प्रोग्राम का वक्त को मलूज़े खातर रखते हुए मैं दोनों को खुशामदीद कहता हूँ. तो इज़ाबेल आपसे मैं सबसे पहले बात करूंगा कि ये जो नूर मुकद्दम का केस हुआ है इसको आप किस नज़र से देखती हैं. जिस तरह की कमेंट्स आए हुए हैं, जो कत्ल हुआ है वो बहुत ही सैड इंसिडेंट है जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन जिस तरह की हमारी सोसाइटी में फिर एक उनका विक्टिम ब्लेमिंग शुरू हो गई, आप उसको किस नज़र से देखती हैं? First of all, thank you very much, and thank you for introducing my very good friend and my collaborator there, Sidra. With the Noor Muqaddam case, just yesterday, I had 2 messages in my DM asking me what authority should they complain to about the victim blaming and the propaganda against her character, right? So यहाँ ये होता है कि whenever there's an incident that happens, right, law enforcement तो बीच में आती है, लेकिन जो public split हो जाती है बीच में, ठीक है, there are the people like us who don't care either for this side or that side. We just care about what the law and the issues and what crime that has happened and has been repeated again. But then there's these two sides, right? So it's like the public are pushed to either one of them. So either you're supporting or you're not, right? And people forget about the fact that it is an ongoing investigation. There's, nothing has been decided. The courts are still, working on this case and all. It started with this thing also, and it's really deplorable because somebody has to reach out to me through a DM on Twitter who doesn't even know me to ask me because they trust me, I guess, through my tweets, as to which authority should they complain about the disgrace, the propaganda that is being brought on this lady, this deceased lady, God bless her soul, through the media itself. And that would include private media, national media, whatever, right? By the television or whatever. So I gave her all the information and I gave her the rules. I gave her, I gave her the options to, these are the options that you have to contact, but this shouldn't be the case. ये हमने में जो है हमने ये एक स्टाइल बना दिया हुआ है, एक हैबिट बना दी हुई है, एक रूल सा बना दिया हुआ हमने. We have to take sides. It's yes or no, and then you have in the middle you have you have Leah, you have judiciary, you have all of that going on over there. And the reason is because women are easy target, so that is what they will do it. They have done it, they will continue to do it unless you stop it. So ये नहीं कि बाहर, the fact that this happens abroad is no argument. The fact is that it should not happen. Over and above the status of women in the country, over and above the area of disorder and unlawful things that happen surrounding women, this should not happen. Some authority should take care. In this case, right, would be whether it's PEMRA, whether it's the PTA. It should not be free for all. There should be some kind of a gap. There should be some kind of a guideline. Actually, the guidelines are there when I read them late last night. The guidelines are there. It's not being followed. So that is something that they need to look up. Government needs to look at. The enforcers need to look into to stop this. That every time a rape happens, every time a murder and a rape happens, that they need to step back and stop this culture, or at least bring it under control. They should right away start doing the way. जी. अच्छा, इसमें मैं अभी कुछ दिन पहले अभी कुछ YouTube पे देख रहा था, तो उन्होंने एक साहब ने बड़ा ही अगेंस्ट प्रोग्राम किया और उनको ये साक्षाना करार दे दिया कि देखें जी, पहला नतीजा आ गया औरत मार्च का, मेरे जिस्म मेरी मर्जी को. तो ये किस किस्म की साइकोलॉजी को जाहिर करता है हमारे मुल्क में? ये तो बड़ा ही एक अनफॉर्चुनेट सा है कि आप एक चीज को विक्टिम ब्लेमिंग की तरफ हर चीज पे चले जाते हैं. इसको आप किस नजर से देखती हैं कि This is what I'm saying. It is the culture that has been created, and nobody is helping us end this culture. We are here by ourselves trying to end it, right? People like myself, Sidra, and the whole thousands of other people who want to make a change, but we can't make the change because we are not an authority. It is, as I said, and I have been saying recently in a lot of my tweets and a lot of my social media, this thing, and in a lot of my conversations with even government people that I know and are friends with me,
including with the current ruling government, it's not so much the lack of law, right, or regulation you have in place. It is the lack of implementation, the callousness on the part of Leah, the callousness on the part of government, the callousness on the part of even the child protective agencies and the women protective agencies. If everybody had pulled their weight together, were held accountable, I don't think the situation would have been as problematic and as severe as it is now. यहाँ किसी का जो है अभी it's just a matter of time कि जी जैसे ही उनको मारा गया कुछ हो गया, there's this whole section that starts off with saying पहना क्या था, पिया क्या था, किसके यहाँ गई, relationship थी, you know, it's this whole culture. It doesn't matter. There was a crime committed, there was a person who was injured, who was murdered, and that is what we need to focus on. कोई स्टॉपेज की नहीं है ना, स्टॉपेज नहीं है ना, विक्टिम ब्लेमिंग तो वही है ना कि आप रूल है, you haven't come to the end of the investigation, so you have no business, nobody, whether you are educated or not educated, जो उनको गाइड कर रहे हैं वो तो एजुकेटेड है ना, या जिन्होंने रूल्स बनाए वो जिन्होंने इम्प्लीमेंट करनी है वो तो एजुकेटेड है ना, वो चुप करके क्यों बैठे हुए? समझना जी जी, मैं बिल्कुल बात समझ रहा हूँ। अच्छा सिद्रा, आपसे सवाल है मेरा कि जनरली एक और तीसरा तबका आ जाता है। एक तो आपने जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग तो फेवर में आ जाते हैं, कुछ उसकी मुखालफत में आ जाते हैं, और वो बिल्कुल हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी हर इशू पे ही पोलराइज हो जाती है और कंट्रोवर्शियल हो जाती है। एक जो इशू सबसे बड़ा जो खवातीन हैं हमारी, जो वुमेन एक्टिविस्ट हैं, उन पे ये आता है कि उनको कहा जाता है कि जी सिर्फ और सिर्फ एलीट क्लास की खवातीन हैं, और अब जैसे ये नूर मुकद्दम का मसला है उस पर तो बड़ा ही ह्यू एंड क्राई हो गया क्योंकि वो भी एलीट क्लास से ताल्लुक रखती थी। उसके अलावा जो गरीब लोग हैं, जैसे वो पिंडी में जो एक खातून जो उनको जो मारा गया और उसकी बच्ची को, उनके बारे में इतना इशू ना मीडिया उसको सीरियस लेता है, ना सोशल मीडिया लेता है, ना जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको आप किस नजर से देखती हैं, और ये ऐसा इंप्रेशन क्यों है? Thank you very much, Savita, for having us here. That's a really, really valid question, and unfortunately, it's something that we experience almost every day. हम लोग रोज इन केसेस के साथ काम करते हैं, and रोज that is the kind of opposition we get. तो पहला issue तो that is associated with all of this is the public narrative. हमारी public ने preconceived notions बनाए हुए हैं about how the death of a woman will be treated. Every time a woman gets murdered or gets beaten up, it's not about a human getting beaten up. It's not about a human getting victimized. It's about, oh, औरत ने क्या होगा, and the whole cultural mindset is कि the accountability sits with that female. जी. तो जब हम उसकी बात करते हैं, and at that time, so देखें, for the other biggest problem that we see with women that require help and are not able to leave, the biggest barrier is lack of financial independence. जी. ज्यादातर औरतें जो टाइड हैं इन इश्यूज से, उनके पास they don't have a home to go to, they don't have families that support them, they don't have a running income. तो जो the women that work, that can support themselves, that are financially independent, are the ones that come to help. That is where this kind of divide happens. कि आप देखते हैं कि most of the social media activists or any human rights activists in this space are actually people that are financially independent या belong from elite class. Because finance is required to help these women. अगर हमारा law और regulation उनको इंसाफ और accountability से help करता होता, तो everybody would be equal और उनको जरूरत नहीं होती कि people with funds and backing need to come and rescue them. Every day हम लोग बात करते हैं with women that have kids that are getting beaten up, that are being lit. Literally last week we've spoken to a woman who said कि मेरे ऊपर oil फेंका जा चुका था मुझे जलाने के लिए. By the time मेरा भाई पहुंचता वहां पे, and even then the brother came and said कि नहीं मुझे FIR नहीं जाना because ये औरतों को पुलिस स्टेशन में सही से ट्रीट नहीं करते. Then they had to involve us. Why? Not because the family was not supporting her, because they required resources to back them. They required some phone calls in the network to go and protect them. जी, एक और क्वेश्चन अभी आया, अभी जो मीडिया पे चल रहा था वो यही था कि देखें जैसे वो अभी जो पिंडी में जो खातून को मारा गया है वो बहुत ही बैगर थी, वो तो उसका और बहुत ही कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड बिल्कुल जीरो है। तो मुकद्दम फैमिली तो काफी रिच फैमिली है, ऑफ कोर्स उनके मुकाबले में उससे भी ज्यादा रिच लोग हैं, तो वो तो एक बराबर का है। तो किसी ने फंड क्रिएट किया नूर मुकद्दम के लिए जो है ना फाइनेंशियल एड के लिए, तो व्हाई नॉट दैट पुअर वुमन, दे नीड मोर फंड देन दैट। जी बिल्कुल, absolutely, that's true. The thing with funds is, again, you need campaign and backing, tracking that woman, getting her shelter. No, हमारे shelters तक are very selective with who they take.
आपके बच्चे होंगे तो वो आपको नहीं लेंगे, आपका बच्चा एक सर्टेन एज से बड़ा होगा वो आपको नहीं लेंगे, अगर आपकी वेरिफिकेशन नहीं होगी तो वो आपको नहीं लेंगे। अगर अब मसला ये, अब ये जो रावलपिंडी में जो औरत है, सो अनफॉर्चुनेट, उसका आपने देखी होगी, उसकी वीडियो भी थी where they were questioning, उसको ना नाम याद था ना उसकी आइडेंटिटी थी। जी It's because we have not created a network जहाँ औरतें जाए कहें भाई मेरे साथ ये हुआ है, own me, because our own system does not allow that. Do we, अगर आप पाकिस्तान के सिस्टम में देखें, do we know every woman that holds a national identity card? Do you think every woman in Pakistan is on the system? No, she is not. That's why a lot of women get killed जी and जी we do not know them. Because उनको घर से बाहर निकलने की इजाजत ही नहीं है, तो उनका शनाख्ती कार्ड ही नहीं है, उनको कभी ना गाड़ी में बैठने को मिलता है, ना ट्रेन पे जाने को मिलता है, घर में बस रोटियां पकानी है बैठ के। तो people don't know there are women that exist in the society. They are not on paper. तो that is another challenge that we have. ये जो आपको केस दिखा ये इसलिए because she was in public, उसके भाई ने थोड़ा शोर मचाया, got attention and people found out. जी Otherwise you will not. There are so many of those women that actually have passed away and we don't know it. इज़ाबेला, आपसे ये मेरा क्वेश्चन है, आपने जैसे बात की कि गवर्नमेंट की तरफ से लॉज तो हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। आई थिंक इट्स इन्फोर्स नहीं किया जा रहा। वी शुड यूज दैट वर्ड कि गवर्नमेंट इज आल्सो नॉट सीरियस। क्योंकि अभी मैं देख रहा था कि क्योंकि एक ओवरऑल जो सोसाइटी है हमारा, जो एक जो माइंडसेट है जो मैन डोमिनेटेड है, तो उसमें अगर कोई बंदा, अगर कि मैं एक सोसाइटी से ग्रोन अप हुआ, तो अगर वेदर व्हाट आई एम डूइंग इट डजंट मैटर कि मैं आई एम इन अ पुलिस, I'm in a politician, I'm in a judge, I'm a lawyer, whatever, but mindset I will carry everywhere my mindset. तो आज मैं देख रहा था एक ट्विटर पे किसी ने शेयर की थी कि पुलिस ऑफिसर थे, कोई स्पाई वगैरह होंगे डेफिनेटली, वो खवातीन को और मर्दों को वो उसमें गाड़ी में पिकअप में डाला उनको, और उन्होंने अब अपनी जिप खोल के खड़ा हो गया पुलिस वाला। तो अब ये हम उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे, हम उससे सोसाइटी से जो लॉ एनफोर्समेंट करेंगे? क्योंकि अगर पुलिस वाले के पास भी कोई खातून लेके जाएंगी केस, वो भी कहेगा बीबी पहले तू की किता सी, पहले तो ये बताओ ना तुम रात को क्यों गई थी। वो सीसीपीओ लाहौर का जो वाकया है, उसने सबसे पहले कहा कि जी पहली बात तो ये है कि उसको अकेले नहीं जाना चाहिए था, दूसरी बात ये है कि उसको रात को 2 बजे नहीं जाना चाहिए था। तो इस माइंडसेट को आप कैसे ठीक करेंगे? Before I comment, I just wanted to say that the lady in Pindi, right, the one, to aapne zikr kiya, it's not I don't expect you to know all the details, but because we two are still in this interview, and so for people will say inko ye mujhe pata, मैं इसलिए बताना चाहती हूँ, clarify करने, it was her son, her 14-month-old son, right, Sidra? जी जी The 14-month-old son. In that video, the son was injured, he had not died as yet. During transportation, the poor 15-year-old died, and then the birth was died in the hospital. एक तो ये बात हो गई। आपने कहा कि हमें जो है इन्फोर्स की बात करनी चाहिए। अगर आप बिकॉज आई स्टडी द सब्जेक्ट राइट एंड आई लुक्ड ऑन द ब्लेम, एक हम विक्टिम ब्लेमिंग की बात करें, इधर हम ब्लेम गेम कर रहे हैं बिटवीन द इंस्टीट्यूशंस, बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशंस, बिटवीन द यूनिट्स, बिटवीन द सब यूनिट्स ऑफ द यूनिट्स, राइट, इन the police, wherever, right? And I'm again not blaming the police. What I'm saying is that you have a set of forces, you have a set of implementers. Now police is the what I see as LIA, like, so the law enforcement agencies, right? What's happening with the other project of mine that I'm working with Stop Public Urination, you know what's going on with that. Are they जी जी enforcing? They're not enforcing. That's what I call the enforcers, right? Then you have implementers. You have implementers as parliamentarians, people who are making the law, people who are proposing the law. If you are not there, honor and implement the law, what is the point of moving these bills, making them into law, taking them all through the parliament, having the ratification of the president, when you're going to do nothing about it? I have a list in front of me. Last night I was looking at it and I'm thinking to myself, this is what the problem is. There is not the lack of law. You can keep making and keep making and keep making new laws and new ordinances and whatever you want to make, but if you're not going to implement them, and if you're not going to enforce them, again, now giving your description, which is true, these people have to work together. The law and implement both together. See, ये ordinance था, I think 1979 का था, again related to women, excuse me, related to women. After that, they did something in, what was it, 2006. After that, they did something in 2016. Now we just have something, about the domestic, the protection bill, right? For 2021, uska kya kahan wo chala gaya hai, and I don't want to say, we all know where that has gone right now. Here's the problem. The problem is that you are now giving, and with due respect to all the people involved, all the organizations involved, you have just given someone to review a very important bill that is going to go into final law, be ratified later, whatever happens, right?
but this organization is also supposed to be overlooking the entire institutional of the religious what do you call it, the schools, the madras and all, where we have sexual abuse. How does it make sense? Have they been successful in finishing that? No, they have not been successful in finishing that. So how do you expect them to work for our benefits? Number one. Number two, the constitution mandates that there be a woman representative on that council. There is no single woman representative in that council. I don't know whether they will change it now. Here are the problems that I'm trying to say. What I'm trying to say is that they don't work in coordination. They don't want to implement it. They don't want to enforce it. Enforce वाले कहते हैं है तो सही, ਅਸੀਂ नहीं करेंगे तो की बनेगा, साड़ा की होएगा, कुछ नहीं है, accountability किधर है, right? Again, for the good people who are doing their jobs, both on the implementation side and the enforcing side, my due respects to everybody. I work with some. I have got results through Twitter, through DM, whatever. I've got results for women and for child. Because I was still one time, मुझे रिश्वत देनी पड़ी इस्लाम को, ठीक है? This was 1989-89. मुझे रिश्वत देनी पड़ी ताकि मेरा एक्स ने जो पैसे वहां दिए थे मेरे साथ गंदी हरकत करने के लिए, उसको मैंने रोका. ये अपारा पुलिस जो है, ठीक है? उसके बाद मैं खुला करती हूँ. कहने मकसद ये है कि I lost a sister to domestic abuse in 1984. वो मेरा मुझसे ये उनके खानदान जो है वो कहते हैं पेज बंद कराओ. मैंने कहा पेज मैंने बंद करवाना. That was 84. Where are we now? We are now in 2021. Has domestic abuse stopped? No, it has not stopped. हर कोई cover करता है. It's rather increased. Increased तो हुआ है ना. आप numbers देख लें. मैं वो कल रात को भी definitely increased. Definitely increased. और उसमें था कि 40 कितना था, मैं अभी बताती हूँ आपको कि give me a second here. According to a Pakistan demographic health survey in 2017-2018 क्या है ये? It revealed that 42% of women and 40% of men believe that beating the wife is justified under specific circumstances, arguments वगैरह जो होते जैसे, or she goes out to shopping or whatever without telling him, या neglects the children या burns the food. तो ये तो हाल है हम लोगों के कंट्री का. इन बातों पे मारेंगी भी और जान से भी मार देंगे. कर लो जो करना है. मसला क्या है कि उनको पता है यार किसी ने फोन कराएंगे हैं, ये somebody knows the somebody over there. This is what happens in the country. It goes back to what I was saying. It is the of implementing the law. सिद्रा एक और आपसे जी सिद्रा आपसे सवाल है. एक और जो थॉट प्रोसेस है पाकिस्तान में वो है हर चीज को हैंग दम, सबको फांसी लटका दो, चौकों पे फांसी लटका दो. तो वो एक माइंडसेट है जो हमारी कौम एक पढ़ के जो नसीम एजाजी के नावल जो जवान हुई है वो समझते हैं कि कोई एक हीरो आएगा इस्लामी, उस पे घोड़े पे बैठा होगा और झंडा लहरा रहा होगा हाथ में और एक तलवार लेके अगर सबके सर कलम करके और सबको उस पर लटका देंगे. आप क्या समझती हैं कि इस तरह की जो सख्त सजाएं हैं ये इस चीज को डेटर कर सकती हैं? एक इंसाफ मिला अपनी जगह पे है, लेकिन एक आप फौरी तौर पे फौरी इंसाफ जिसको कहते हैं और आपके गोली मार दें और उसको फांसी लटका दें और चौक पे लटका दें उसको फांसी, या एजुकेशन से इस मुआशरे में टॉलरेंस है? ये आप क्या समझती हैं? That's a great question, Tahir Saab, and I'm absolutely not in favor of public hangings or anything of that scale, of that violence. Or unfortunately, this reeks of the lack of moderation in our society. अगर आप notice करें तो हमारी society में हर चीज extreme पे होगी. किसी से कुछ खत्म करेंगे तो मार के खत्म करेंगे, किसी को कोई reprimand करेंगे तो उसमें सर कलम करना होगा, hanging करनी होगी, सबको दिखाना होगा. कोई moderation नहीं है और इसमें बहुत बड़ा रोल हमारे media narrative का है. Even if you look at, so हमारी सबसे ज्यादा population हमारी consume क्या करती है? ड्रामे. उसमें ज्यादातर आपकी औरतें और बच्चे इंक्लूडेड हैं जो रोज बैठ के 3-3 घंटे ये ड्रामे देख रहे हैं. इन ड्रामों में अगर आप देखें कोई काम का मैसेज नहीं है. All of it is about female victimization. It's about how angry men are good men that run the houses that you need to follow, that you need to abide by, and everybody falls in love with these angry men. आप कितने भी हमारे यहाँ pieces of stories उठा के देख लें, ड्रामे हो, movies हो, whatever, everything is about how this guy is so violent and everything, but the girl still falls in love with him. ठीक है? इस तरह के जो narratives है ना, extreme narratives, emotions होंगे extremes पे होंगे, relationships होंगे extremes पे, कोई तमीज से नहीं जो है ना मिल बैठ के कोई चीज का solution नहीं होगा, no negotiation is involved, no balance is involved in anything. That eventually leads to this anger and this adrenaline जो हर चीज में इनको चाहिए ना कि
बस किसी चीज का भी एक्सट्रीम आउटकम दे दो तो they're happy with it. What does a public hanging get you? Nothing. Killing a person that has, देखें हर चीज की अकाउंटेबिलिटी होती है, हर चीज का एक एंड टू एंड, हमने दुनिया में हजारों रिसर्च के थ्रू ये चीज लर्न कर चुके हैं. We don't need to rework this or reinvent this. कि you require education, tolerance and practical accountability across all systems to show other people कि आप सोसाइटी में अगर आपको एक सर्टेन वे में बिहेव करेंगे तो आप एक्सेप्टेबल हैं, वरना आप एक्सेप्टेबल नहीं हैं. So what needs to happen is, first of all, हमारे curriculums do not do justice to this kind of education. We need to start sex education very early on. And when I say sex education, it's a very holistic piece. लोग sex education को भी समझते हैं कि ओ भाई छोटे बच्चों को कह रहे हैं बता दो how sexual interactions happen. No, it's about consent. It's about space. It's about how you conduct yourself with other people. आप हमारे यहाँ पाकिस्तान में देख लें, बहुत छोटी सी चीज है. हर वक्त माँ बाप 3-4 साल के बच्चे को कहेंगे नहीं आंटी आई है, उनको हक कर लो, हक कर लो. Why? It is a child's body space. No hugging. If the child is not comfortable, you should not push the child to go and hug the auntie or uncle or whoever it is. हमारे यहाँ child abuse किस कदर prevalent है. We know that in 96% of cases, the child abuser is known to the family, is a family friend, or is from the acquaintance circle of the parents. So the abuser is known to you. Why has the abuser gone at large and tested boundaries? Because उसको पता है यहाँ कोई accountability नहीं है, यहाँ कोई behavior correction नहीं है. लोगों को पता ही नहीं है कि what are ethical and moral standards to go by, क्योंकि हमने वो सिखाया ही नहीं है. हमारे स्कूलों में क्या होता है, आपने ये रट्टा नहीं लगाया, आपको डेरिवेटिव्स नहीं आते, आप फेल हो जाएंगे. किसी ने ये पूछा है कि आपको सही और गलत में डिफरेंस पता है, आपको ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट की क्या एक्टिविटीज है हमारे यहाँ? नहीं. माँ बाप को अकाउंटेबिलिटी करनी है, बच्चों की थप्पड़ लगा दिया. Have you tried to communicate with your child? What is the problem? How they should be behaving? There is no nurturing around this. This violent behavior starts very early on. Every day we see cases. बच्चे आके कहेंगे मेरे भाई ने मेरी अम्मी को थप्पड़ लगा दिया. अगर घर में मर्द है, वो आपका बच्चा ही क्यों ना, उसे आपको थप्पड़ लगा दिया, it's acceptable. How and why? यही मर्द जाके अपनी बीवियों को मारते हैं, अपने बच्चों को मारते हैं. They end up raping and then they end up killing one day. The problem we are witnessing public is that the parents were fully supportive of what he was doing. They were privy to what he was doing and did not take action. So behavioral correction has gone to a point where we lost no muqaddam. जी इज़ाबेला, एक और पॉइंट से लोगों का जो है ना, एक्चुअली मैं एक ऐसा फीडबैक जो लोगों का आता है, लोगों का डिफरेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि हमारी सोसाइटी में भी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट माइंडसेट है. ये नहीं है कि 3-4 किस्म की आइडियोलॉजीज होती हैं तो उसको मैं कहता हूँ कि इट्स आइडियोलॉजी, लेकिन ये इफ यू हैव like 500 type of opinions, so it's a confusion, it's not ideologies. तो एक सबसे बड़ा जो लोगों की तरफ से आता है और जो प्रॉब्लम मुझे फील होता है, जो सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग कैंपेन करते हैं और जो औरत मार्च या जो भी एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो इसको जिसे कहते हैं ना कि जा बच्चा चढ़ जा सूली राम भरी करेगा. तो खवातीन के लिए कोई ऐसा लीगल फ्रेमवर्क, कोई फाइनेंशियल गवर्नमेंट की तरफ से या कोई शेल्टर होम्स ऐसे नहीं है कि अगर कोई खातून जो अगर वो एक सेपरेशन लेती है एक अपने हस्बैंड से या वो एक अपना अलग डिवोर्स मांगती है, तो उसको पहली बात तो ये है कि उसके घर वालों पे वो बोझ बनेगी. तो पेरेंट जा चुके होते हैं, बाय द टाइम किसी की डेथ हो गई है तो वो भाई अपने अपने उनकी शादीशुदा हैं, वो उनके अपने बच्चे और उनकी बीवियां हैं, तो वो उनकी टेक केयर नहीं कर सकते, वो उन पे डिपेंडेंट होती हैं. आपको शेल्टर होम नहीं मिलेगा, आपकी जॉब नहीं है, आपको सोशल सिक्योरिटी नहीं है, आपको प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं मिलेगा. ये जब तक आपका एक पूरा फ्रेमवर्क ना हो तो ये किसी को उकसाना कि जाओ तुम जाके अपने हस्बैंड के नाम की बात सुनो और तुम उससे अलग हो लो, तो ये तो एक बड़ा मतलब बीच में आपको एक उकसाने वाली बात होगी. आप क्या समझती हैं इसे? Shelter homes there are, but they're not enough. And I will give you just an example. Example means I'm just giving you a hypothetical number, for example, right? So at any given month, for example, if you have, and it's not even, I don't think it's very drastic, this number that I'm just throwing out over there. For example, if we had all over Pakistan 3,000 domestic abuse victims, right? All rape victims, inclusive everything, right? So which needed a place to stay, a shelter to stay. Those 3,000, if you divide over all the provinces, at the max I'd get maybe, I don't know, 1,500 in, right? वो बाकी 1,500 किधर जाएंगे? मैं आपको एग्जांपल ना, अब सिद्रा ने एग्जांपल दिया
एक थी जिसको अभी मैं मौजूद अभी हेल्प कर रही हूँ, हेल्प करे. I was making sure that her FIR was filed. ये लाहौर का केस. I was making sure that the FIR was filed because the police, again I don't want to speak against bad, but because my experience, right, मुझे पुलिस में पैसे देने पड़े थे तो मुझे पता है उस सिस्टम का, right. वो जो I was making sure that FIR was filed. वो विक्टिम थी, डोमेस्टिक अब्यूज को रिपीटेड थी, लेकिन इस दफा उसने स्टैंड लिया. ठीक है, बच्चे भी इन्वॉल्व थे. शेल्टर में गई हैं, शेल्टर वालों ने कहा कि हमने अरेंज किया थ्रू वेरेवर, लॉयर भी अरेंज किया सब. कहने का मकसद है, they said that we can take you in, this is a destitute woman, right, we can take you in but we don't have space for the kids, because not that they don't take kids up to capacity with the kids. So in that, this is one woman, where do the kids go? एक तो ये हो गया. तो जो है they don't have the match, it's not a match, so the number of victims or the people that need the system for their use, that's what they. अब आप देखिए, मैं ये रात को मैं पढ़ रही थी नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस फॉर वुमेन NCSW जो है ना 2003 के रिपोर्ट के बारे में, वो कि ये इंफॉर्मेशन पुराना है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज where do we stand now? According to a 2003 report, 8% of women were incarcerated because they had failed to prove rape charges and were consequently convicted of adultery. वो बंदे कहाँ गए जिन्होंने इनको रेप किया? छुट्टी हो गई ना उनकी. सिस्टम क्या हुआ? माने मेडिकल लीगल कितना एक्टिव था, नहीं था. Is what I'm saying. Where is the system? It goes back to the shelter. Yes, you have 3,000 example दिया मैंने victims, but you do not have capacity for 3,000 in a month to go to shelters. तो अब वे क्या करें? Government should put in more. They should know. There are two things they need to do. One is to fix this problem. वो सजा कुछ तो करें, उनको इन्फोर्स तो करें ना. वो आपकी बात है, इन्फोर्स करें और इम्प्लीमेंट करें. लॉ है ना. किसी ने रेप किया पकड़ के अंदर, कौन पहले? ये अजीजुर रहमान के मौलाना, उनका उस वाले उस मैन का केस का क्या हो रहा है? डीएनए की एविडेंस नहीं मिली. क्यों? कि 3 दिन बाद, 2 या 3 दिन बाद हुआ. डीएनए की आपको एविडेंस करनी है, मेडिको लीगल करवानी है, आपने 6 ये अपना within 6 hours करनी चाहिए to get the correct result. That young man was failed from the start. उन्होंने admission भी, the perpetrator has already admitted to the crime. You see, the systems तो है लेकिन enough नहीं. पूछना था कि जिसने करवाना था, अगर पुलिस आई थी, whoever was involved, who gave him the advice that you don't need to do anything, you can just stay put and let's do something after 3 days because we know we are going to fail you. एक conniving जो चल रही है ना, this needs to stop ना, and the support needs to start. बात शेल्टर से स्टार्ट हुई थी, अगेन बैक टू सपोर्ट. वेयर इज द सपोर्ट? जी, उसके अलावा देखिए जो शेल्टर होम भी है वो भी एक जी शेल्टर होम भी एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है. उसको पूरी जिंदगी गुजारनी है, बच्चों को उन्होंने पढ़ाना है उसने, तो वो उसके लिए गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट, अगर लो इनकम है, उसको कोई गवर्नमेंट की कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, उसके पास अपना कोई घर नहीं है, तो वो तो एक सारी उम्र के लिए ना घर वाले पे भी अगर वो जाएगी, घर वालों पे भी इतना भाइयों पे बोझ बन जाएगी, वो भी भाइयों पे ही बनेगी. हम अल्टीमेटली फिर भाइयों पे लेके जा रहे हैं, पैट्रियार्कल सोसाइटी पे मेल पे ही डिपेंडेंसी कह रहे हैं कि वो जाएगी वहां पे और वो उनकी आगे उनकी वाइफ और उसके बच्चे होंगे, उनका खुद का गुजारा नहीं होता. तो मुझे ये बताइए कि इसका जो हल है, ये बहुत बड़ा लंबा टॉपिक है, इस पे तो आप पूरी थीसिस लिख सकते हैं. एक जैसे अब हम तीनों वेस्टर्न कंट्रीज में रह रहे हैं, आप ईस्टर्न में है, ऑस्ट्रेलिया इज आल्सो डेवलप्ड कंट्री और मैं और इजाबेला तो नॉर्थ अमेरिका में है. तो यहाँ पे जो है जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जब अपने इलेक्शन प्रोमिसेस करती हैं उस पे वो अपने फंडिंग का ऐलान करती हैं कि हम फलां चीज पे इतनी फंडिंग एलोकेट करेंगे. जैसे आजकल क्लाइमेट चेंज पे हो रहा है, वो कहते हैं कि हम सस्टेनेबल जॉब्स क्रिएट करेंगे, क्लाइमेट चेंज पे ये करेंगे. इसी तरीके से वो फंडिंग अनाउंस करती है कि हम लॉन्ग टर्म केयर होम्स पे इतना करेंगे, वुमेन शेल्टर पे आप इतना करेंगे, या जो डोमेस्टिक अब्यूज पे करेंगे. तो आप लोग क्या इस पे कोई काम कर रही हैं कि आप एक प्रेशर ग्रुप बनाएं और आप डायलॉग करें, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारी, उनके जो मैनिफेस्टो में नारे नहीं, एक प्रॉपर हो कि उनकी प्रायोरिटी में ये है कि जब वो आएंगे, अगर कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, वो ये कहेंगे जी हम इतने % बजट का शेल्टर होम्स के लिए रखेंगे. तो ऐसा कुछ आप लोगों का प्लान है? That's a really yeah, sure, I'll take that, and then maybe Isabella, you can add to it as well. Sure. Also, in terms of the conversation that Isabella was having, I just wanted to flag as well that majority of the shelters that we have today are not government owned.
Most of them are actually initiatives run by people privately or bodies of friends that have come together and started initiatives. तो government बहुत ही minimal role play करती है. और as far as party, political party और government commitments की बात है, तो पाकिस्तान में जो इस वक्त framework है, एक तो zero empowerment framework, औरतों को shelter दे भी देते हैं, there is no next steps after that, कि how will you transition them out of these shelters, जैसे कि आप कह रहे थे. जहाँ तक बजट की बात है, minuscule amount of budget allocation to women shelters, even if they were to implement that, हमारी problem इतनी amplify हो चुकी है कि it's a long journey to get to a point जहाँ आप सारे औरतों को वो कर सकें, accommodate कर सकें. और जहाँ तक हमारा role है at this stage, तो हम literally we are just trying to stay afloat, helping the victims that are coming to us. But we definitely are planning, and Isabella and I talk about it every day, कि what should we do to make a future-proof framework, ताकि ये औरतें ना सिर्फ इनको protection मिले, but then they can go ahead and do something and support their kids. So that's definitely on the cards. But getting to a point where you actually engage the political parties within Pakistan and hold them accountable is, again, a massive piece of work, but not something we're running away from, something we will definitely look into. We just need to expand our functions and operations and get some more support, get some more networking going on. And then that's definitely, inshallah, something that we would like to pursue. जी इजाबेला, आप कुछ कह रही थी इसी टॉपिक पे? मैं कह रही हूँ कि नेटवर्किंग की बात हुई, नेटवर्किंग से ज्यादा हुई, मैं ये ना हम लोग रात को मैं 4-5 बजे सुबह की सो रही हूँ, क्योंकि टाइम डिफरेंसेस की वजह से. शी इज मोर और लेस इन द सेम बोट, राइट? जी इतनी कभी नींद आ रही होती है कि हमारे जो टाइपिंग होती है कुछ इधर उधर रह जाती है, बिकॉज वी आर सो एग्जॉस्टेड एट द एंड ऑफ द डे, बट बिकॉज यू वांट टू गेट देम टू वी वांट टू डू द वर्क. दिस शुड नॉट एक्चुअली बी द सिचुएशन. हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग चार्ज है, बिकॉज वी नो द सिस्टम इज फेलिंग. एक तो ये, दूसरा ये भी है कि हम पहले थोड़ा धीरे धीरे चलते थे, कम से कम मैं चलती थी धीरे धीरे इस सिचुएशन में. क्यों? सबसे पहले जो हमारे कौम है ना, कोई भी बाहर बैठा हो ना, उससे कहेंगे लो जी ये तो अंग्रेजों की वो है, या पता ना एजेंट बना देते हैं हम लोगों को. जी, एजेंडे पे काम कर रहे हैं, उनको फंडिंग मिल रही है. शुक्र करो कि कोई बाहर बैठा तुम्हारे लिए कुछ कर रहा है, या आप लोगों के लिए कुछ कर रहा है. अगर आप नहीं कर रहे हो तो हम लोग कर रहे हैं. आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है भाई? आपने करना, ये ले लो प्रोजेक्ट ABCD मुझसे आप ले लो, ठीक है. D मैं किसी और को दे देती हूँ, ठीक है, और वगैरह वगैरह मैं किसी और को दे देती हूँ. वो भी नहीं करना, आते बैठ के करना. और जो काम कर ट्राइंग टू सेव लाइव्स एंड सेव दीज चिल्ड्रन, उन पे तनकीद करना, दैट्स पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. बट डू वी केयर? वी डोंट केयर. वी कीप ऑन डूइंग व्हाट वी आर सपोज्ड टू बी डूइंग, राइट? Trying to even fill in, I'm sorry to say, but trying to fill in for government, trying to fill in for Leah. मैं आपको FR का एग्जांपल दिया, 4 रातें लगी हैं. दिन तो जितने लगे सो लगे, 4 रातें लगी. टू मेक श्योर गाइड करती रही. मैंने कहा नो, यू आर नॉट गोइंग टू गिव अ सिंगल पेन दिस whichever थाना था, क्योंकि आई थ्रू दिस विद अ सर्टेन रिलेटिव ऑफ माइन रिसेंटली, राइट? हम लोग यहाँ बैठे बाहर कर रहे हैं. हम क्या गलत कर रहे हैं? नहीं, मैं पाकिस्तानी सिटीजन भी हूँ, हम सही कर रहे हैं, हम इन्वॉल्व हम कर रहे हैं, राइट? The thing is that they need to pull their own weight too, right? कि why should a woman of domestic abuse, जिनका medical भी हो चुका है, थोड़ा medical भी late हो रहा था, उनमें कुछ चीज भूल गए थे, for example, so then they have to take the whole medical and then go to complete the FIR. FIR जो pending दिखा रहा for like 5-7 days, even a whole week. मुझे गेम समझ में आ रही थी, लेकिन उनको कहा एक टेडी आपने नहीं देना है. वी आर गोइंग टू मेक दिस क्लीन एंड द रिपोर्ट इज गोइंग टू कम. वो फाइनलाइज हो गया हुआ है. नाउ वी हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ दिस इन द सिस्टम, राइट? दिस इज स्ट्रगल ऑफ अ डोमेस्टिक अब्यूज विक्टिम, जिनके सारे निशान इधर उधर सब कुछ लगे हुए. पहले वो पुराने 100 थे जो फ्रेश था, जो कि अस्पताल में वो 4 घंटे अपने बच्चों को लेकर के बैठे. कोई पूछने वाला है नहीं, वो फेसबुक पर थी. आप समझ मेरी बात ना? सिस्टम का फेलियर जो का है, this needs to stop ना. और ये विक्टिम ब्लेम की बात आप कर रहे हैं, हम उस चीज के विक्टिम बैठे हुए इधर. ये क्यों कर रहे हैं? ये आगे आगे क्यों हो रहा है? वो क्या मिल रहा है? पैसे मिल रहे हैं? कहाँ से? बाहर से मिल रहा है हमें? जी अच्छा, मेरे प्रोग्राम का वक्त अभी ख़त्म होने वाला है. मैं लास्ट सवाल पूछता हूँ सिद्रा से, और उसके बाद एक्चुअली मेरे दोस्त जो हमारे तीसरे गेस्ट थे आज के, डॉक्टर अमीन मोहम्मद, ही इज़ एट वेरी सीनियर साइकेट्रिस्ट इन कैनेडा, so unfortunately he couldn't join us, so I will do a second program with him, so continuation of this program. So I will just talk to them with him that what is the psychological behavior of why people are doing like that. So from the उनके इसके नफसियाती पहलू पे हम इस पे बात करेंगे. तो मेरा सवाल आखिरी आपसे, एक मुख्तसर जवाब दे दीजिए हमारा प्रोग्राम खत्म होने से पहले.
कि लोगों में जो जनरल पब्लिक में परसेप्शन है, जो शेल्टर होम बने होते हैं उनके बारे में भी कोई लोगों की अच्छी परसेप्शन नहीं है। जैसे कि लाहौर में है, शायद आई थिंक वो गवर्नमेंट का है, मुझे नहीं पता, वो खातून है अफशा लतीफ़, वो बेचारी मारी मारी फिर रही है कि जी वो लोग वहाँ पे उस पर प्रेशराइज डालते थे, जो लड़कियाँ थी वहाँ पे या ख्वातीन रहती थी उनके लिए जो बासर लोग हैं या सियासतदान है, तो वो उन्होंने एक आवाज़ उठाई, तो वो उसी को एग्जाम्पल बना दिया और नोबडी इज कमिंग टू सपोर्ट हर। तो इसको आप कैसे देखती हैं, ये क्या चीज है, ये क्या फिनोमेना है? ये अनफॉर्चुनेटली ताहिर साहब ये बिल्कुल सच है। वी हैव काउंटलेस केसेस वी हैव आइडेंटिफाइड कि दिस इज द केस एंड दिस ऑल टाइज बैक टू अकाउंटेबिलिटी। हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हम अकाउंटेबिलिटी नहीं कर रहे हैं। दैट नीड्स टू इंक्रीज टू बी एबल टू सी के व्हाट आर दीस इंस्टीट्यूट्स डूइंग एंड व्हाट इज हैपनिंग देयर। और एग्जैक्टली टाइज बैक अगेन टू द पॉइंट व्हाई एलिटिस्ट सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स आर रिक्वायर्ड, because that is where your networks come in. That is why you need private shelters and people with backing to help these women, because हमारे government shelters are not safe. There is no accountability. उसमें से कुछ लोग हैं जो help भी करते हैं, but there's some bad eggs everywhere. But these are not the places we should have bad eggs. जहाँ आप अपने most vulnerable people को support कर रहे हैं, you have no गुंजाइश for bad eggs. So that's just, yeah. So it's unfortunate, but that needs to get worked through as well, which is why there needs to be a framework to hold accountable all of these institutes, including the government, the law, and the shelter home organizations. जी बहुत शुक्रिया सिद्रा मिरानी साहबा और इज़ाबेला। जी राव साहब, कमेंट मैं करना चाह रही, रात वाली इनाम गनी साहब की ट्वीट पे, जॉर्जी पंजाब के हैं, वो जो आपने भी जिक्र किया, दैट इंसिडेंट अबाउट द गाय, आई थिंक ही वाज इंस्पेक्टर व्हाटएवर, राइट, उसने अपना प्राइवेसी एक्सपोज किया था टू द लेडी हु वाज वेटिंग इन द कार, शी वाज अपैरेंटली अरेस्टेड टू बी ट्रांसपोर्टेड, और उसने गुस्से में उसको आकर गाली गलौज करके उसने गंदी कर दी। ये राइटली गनी साहब ने राइटली कहा कि इसको ये करे वो करे सब कुछ करे, क्योंकि ही इज गोइंग टू इन्फोर्स द लॉ दैट इज देयर फॉर दैट इंडिजिन एक्सपोजर। लेकिन डिस्कनेक्ट फिर वही आ जाता है जो मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, स्टॉप यूरिनेशन इन पाकिस्तान, 74 is and counting, that nonsense is still on over. तो गनी साहब को कहा, रिक्वेस्ट की, मैं यहाँ से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज, at the end of the day, that was an indecent exposure. This is an indecent exposure on a daily basis. सारी पुलिस को मैंने, I've been tweeting and whatever. It's time they start paying attention. This is where you encourage that behavior, and this needs to stop from this. You enforce, you implement, right? We are going to be much safer than what it is right now. जी थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया, जी बहुत शुक्रिया। जी इज़ाबेला, अब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिद्रा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। आपका ऑफ कोर्स वीकेंड है आपका, और सुबह के वक्त 10 बजे उठना, तो इट्स हेक्टिक थिंग। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा हाइड पार्क, जिस पे हमने बात की। ये एक ख़वातीन का इशू ऐसा है कि इस पे तो बहुत ज़्यादा प्रोग्राम हो सकते हैं। इसके समाजी पहलू हैं, इसके मुआशी पहलू हैं, इसके सियासी पहलू हैं, इसके रिलीजियस पहलू हैं, हम किसी पे भी बात कर सकते हैं। तो अब हमने कोशिश की है नाज़रीन, इस पे कुछ हर टॉपिक पे इसको थोड़ा थोड़ा, हर एक इशू पे इसको हम थोड़ा सा टच करें, तमाम पहलुओं को। तो इंशाल्लाह मैं दूसरा, हमारे एक आज गेस्ट ज्वाइन नहीं कर सके, उनके साथ मैं दूसरा प्रोग्राम करूंगा, इसका पार्ट 2। आप इस प्रोग्राम को ज़रूर देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरा मकसद, ये हमारा जो चैनल है, ये कोई इसका जनरली मैं ये कहता हूँ कि दिस इज़ नॉट माई प्रोफेशन, इट्स माई पैशन। तो आई डोंट केयर अबाउट द रेटिंग्स एंड ऑल दैट थिंग। तो कॉज के लिए काम कर रहा हूँ मैं, डेमोक्रेसी के लिए, सोशल जस्टिस के लिए काम कर रहा हूँ मैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहा हूँ, फेमिनिज्म के लिए काम कर रहा हूँ मैं, उसके लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए काम कर रहा हूँ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए कर रहा हूँ काम। तो आई बिलीव इन जेंडर इक्वालिटी एंड ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर ह्यूमन बीइंग्स irrespective of religion, race, gender, और जो भी उनकी ओरिएंटेशन है, तो इट डजंट मैटर। तो नाज़रीन, आपकी सपोर्ट चाहिए मुझे प्रोग्राम के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्रिप्शन के लिए, और आपके जो है ना, इसको मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह दोबारा फिर आपसे होगी। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. अल्लाह हाफिज़। सिद्रा भी Allah Hafiz.